फ्रेंड्स, स्वागत जनाउछि हमर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आशा करूछि आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। तेबे आज क्लास रो हमर टॉपिक रहिबो सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तेबे चलो आउ देरी न करी आज रो क्लास टी को स्टार्ट करिबा। तो आज क्लास रे आमे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो डिफरेंट फीचर गुडी को गोटी गोटी करी डिस्कस करिबा एवं सेथिरु एग्जाम ओरिएंटेड किछि क्वेश्चन आंसर मध्य आलोचना करिनेबा। देन आमे हमर कॉन्स्टिट्यूशन आड़ को बढ़िबा। तो फर्स्ट आम कॉन्स्टिट्यूशन संपर्क रे मु किछि कथा कहि रखिबी। जेमिति कि 1946 मसीह रे भारतर अवस्था अनुध्यान करी कैबिनेट मिशन रो प्रस्ताव अनुଯାୟୀ संविधान प्रणयन सभा बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन पई जुलाई मासरे निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला एवं 1946 मसीहा डिसेंबर 9 तारिख रु 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख जाए संविधान प्रणयन सभा बसिथिला। तो भारतर नूतन संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख ठारू कार्यकारी होई आसुछि। देन आमे इंट्रोडक्शन देखिनेबा। द कॉन्स्टिट्यूशन of India is a very dynamic creation of our lawmakers. The Constitution of India, as we all know, is a supreme law of country and every citizen of our country has to abide by the Constitution. तो आम भारत रे Constitution को supreme law भाबरे ग्रहण करा जाए, जहा को विभिन्न लॉ मेकर माने क्रिएट करिसंती एवं प्रत्येक भारतीय से सब लॉ को मानिबा को बाध्य मध्य। ठीक अछि। देन आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर गुडी को डिटेल्स रे जानि नेबा। तो फर्स्ट फीचर टी रहिबो द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड एंड इट इज आल्सो वेरी डिटेल्ड। देयर आर 12 schedules and 448 articles in our constitution. The Indian Constitution has incorporated various articles by taking inspiration from the various constitutions around the world. As we all know, India is a very diverse country and it was necessary to draft a long constitution incorporating various provisions in order to accommodate various differences. The parent document for drafting the Indian Constitution was the Government of India Act 1935 and that document itself was very lengthy. The constitution makers found it necessary to incorporate various provisions to provide special attention to states like Assam, Mizoram and Nagaland. Various provisions were also incorporated to uplift the scheduled castes and scheduled tribes. तो आम कॉन्स्टिट्यूशन पृथ्वीर सबुठु लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जेउथिरे सब लॉ एंड प्रिंसिपल को डिटेल्स रे लिखा जाइछे। एथिरे 448 टी आर्टिकल रहिछि। तो सही आर्टिकल गुडी करू किछि हमर निजस्व होइथिबा बेले आमे किछि आर्टिकल को अन्य देश मानकर कॉन्स्टिट्यूशन रो आनिछे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार ही आम संविधान तयारी होइछि। एथिरे निम्न अंचल एवं निम्न जातिर लोक माननक पई कि जेमिति कि शेड्यूल कास्ट हुंतु किंबा शेड्यूल ट्राइब हुंतु तो सेमाननक पई कि विभिन्न प्रोविजन मध्य रहिछि। देन आमे आगो को बढ़िबा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The preamble of our constitution provides India to be a sovereign socialist secular democratic and republic country. There are also various other terms in the preamble which ensure equality and protect people. The various other terms are justice, liberty, equality and fraternity. तो आम constitution आम देश को एक sovereign, socialist, secular, democratic एवं republic country करी गढ़ी तोले। एवं आम संविधान रो preamble रे आहुरी अनेक टर्म रहिछि जहा कि अनेकांशरे आम देश को अन्य देश मानक ठारू स्वतंत्र करिथाए। तो से सब टर्म गुडी को ऊपरे आमे टिके नजर देबा। प्रथमे आसुची सॉवरेनिटी। द टर्म सॉवरेनिटी
was incorporated in the preamble to provide supreme power to the government. The term sovereignty is the backbone of our Indian constitution that protects the authority of the people. Sovereignty is an essential factor of every state. The term sovereignty, as applied to states, implies supreme, absolute, and uncontrollable power by which any state is governed and which resides within itself, whether residing in a single individual or a number of individuals or in the whole body of the people. The sovereignty in India is of two types. First one is internal sovereignty. The states have the power to govern themselves and make laws in certain matters. And number two is external sovereignty. The government is the supreme authority and can acquire or cede any part of the territory for proper reasons. तो sovereignty बा सार्वभौमत्व शब्दटी आम संविधानर मुखबंध बा प्रिएम्बल रे रहिछि जहाँकि आम गवर्नमेंट को एक सुप्रीम पावर देइथाय। एहा आम संविधानर मेरुदंड जहाँकि लोकमानंकर अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करिथाय। तो मोटामोटी भावे कहबाको गले भारत एक सार्वभौम राष्ट्र होइथिबारु एहा अभ्यंतरीण एवं बाह्य नियंत्रणरू संपूर्ण मुक्त अटे। ओके, नेक्स्ट आमे हमर नेक्स्ट टर्म को जिबा सेक्युलरिज्म। It is mandatory to incorporate this term to promote peace between various communities in our country. Secularism promotes the development and unity of various religions. The term secular was added by 42nd Amendment in the Preamble. Secularism बा धर्मनिरपेक्षता। तो सेक्युलरिज्म बा धर्मनिरपेक्षता भारत को एक एपरी राष्ट्र करी गढ़ी तोलुछि जेउ राष्ट्र रे राष्ट्र दृष्टिरू सबु धर्म समान। ओके, देन आसिला डेमोक्रेसी। Democracy is an ancient concept that is followed by many South Indian rulers from time immemorial. Democracy provides people with the power to govern. The representative form of the government is suitable for governing our country due to the huge population. In the case of Mohanlal Tripathi versus District Magistrate, the meaning of the term democracy was discussed, and according to the case, it was held that democracy is a concept, a political philosophy, an ideal which is practiced by many nations that is culturally advanced and politically mature via resorting to governance by representatives of the people elected directly or indirectly. The main reason for incorporating democracy is to provide freedom to the people to choose their own representatives and to save them from the tyrant leaders. तो डेमोक्रेसी बा गणतंत्र बा एक गणतांत्रिक राष्ट्र कहले जेउठारे लोक प्रतिनिधि मानक जरिया रे शासन परिचालना करा जाए। ठीक अछि। तो डेमोक्रेसी परे आमे प्रिएम्बल रो आउ एक टर्म को जानिबा ताहा हेउची सोशलिस्ट। The system of socialism promotes equality among people and ensures the welfare of people. The term socialist was incorporated by the 42nd Amendment. Many leaders were interested in the concept of socialism, especially Jawaharlal Nehru was very much interested in this concept as he was inspired by the Russian Revolution. There were also other famous leaders like Jayaprakash Narayan who helped in the development of this concept. The concept of socialism expels capitalism, which is considered a threat to the economy. There were developments in economic policies to promote the concepts of socialism. तो आम भारत एक समाजवादी राष्ट्र जार मूल लक्ष्य हेउची दारिद्र्य दूरीकरण। तो एही टर्म टी हमर 42तम अमेंडमेंट अनुसार प्रिएम्बल रे जोड़ा हेछि एवं एहा रशियन रिवोल्यूशन रु इंस्पायर होई जवाहरलाल नेहरू को द्वारा संविधान रो मुखबंध रे स्थान पाइछि एवं एही कांसेप्ट को जयप्रकाश नारायण मध्य सपोर्ट करिसेंती। ठीक अछि, तेबे चलो आमे हमर नेक्स्ट टर्म टी को बुझिबा जोटा कि हेउछि रिपब्लिक। तो आम देश भारत हेउछि एक रिपब्लिकन कंट्री
Okay. The concept of republic was borrowed from the Constitution of France. The term republic provides the people power to elect their own representatives. The term republic is the basis of our constitution, as it ensures there would be no hereditary rulers and also ensures that the election would be happening in our country. The President of India is an elected head of the state for a fixed tenure. तो फ्रांस रो संविधान रु एही कांसेप्ट आम संविधान को आसीछि। रिपब्लिक बा साधारणतंत्र राष्ट्र कहिले भारतर राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक नीति रे शासन क्षमता को आसंती नहीं, से निर्वाचित होइथांती। बुझेला, जेमिति सेतेबेले हेउथिला कि राजांकर पुओ ही राजा हेबे, किंतु सेमिति किछि नीति एठारे नाही। एठारे आमे ही आमर राष्ट्रर मुख्यों को बाछि थाउ। ठीक अछि। नेक्स्ट आमे जिबा आम संविधानर मुखबंधरे थिबा आउ एक टर्म जोटा कि हेउछि जस्टिस। The preamble of the Constitution of India guarantees 3 types of justice to its citizens, like social justice, economic justice and political justice. The first is social justice. The concept of social justice promotes equal treatment of citizens and promotes the rule of law. This term ensures that there would be no discrimination among the citizens on different grounds. The fundamental rights also provided in Part 3 of our Constitution also ensures social justice. Then asuchi economic justice. The concept of economic justice avoids discrimination between genders, provides equal opportunity to work, and ensures the equal distribution of wealth. Then asuchi political justice. This term provides all citizens to participate in the political proceedings. तो आम कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार जस्टिस देइथाय तार सिटीजन मानंको। सेगुडी को हैला सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँकि सोशली, इकोनॉमिकली एवं पॉलिटिकली भारतीय मानंको प्रोटेक्ट करिथाय। देन हेउची लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी. The term liberty and fraternity is provided in the preamble of the Constitution. The term liberty and fraternity was used in the French Revolution. तो लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी यही दुई शब्द आम संविधान रे फ्रेंच रिवोल्यूशन रो ही आसीछि। ओके, देन आमे पढ़िबा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे थिबा डिफरेंट फीचर गुडी को जहाँकि अन्य देशर कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि, से सब संपर्क रे आमे आलोचना करिनेबा। ठीक अछि। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर गुडा कामरा आसीछि ना फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, independence of the judiciary and separation of powers among the 3 branches of the government, judicial review, president as the supreme commander of armed forces, equal protection under law. तो ए सब फीचर गुडा को हमर अमेरिका रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि। देन रहिछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिनेबा को फीचर गुडा का हमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि ना पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रीड्स, स्पीकर एंड हिज और हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ। तो ए सब फीचर गुडा को हमर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीछि। देन रहिछि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिनेबा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर गुडा को आसीछि। A quasi-federal form of government with the following features: a federal structure with a center, distribution of powers between the central government and state governments, residual powers retained by the central government. तो ए सब फीचर गुडा को हमर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आसिला। देन हमें देखिबा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर गुडा को सब आसीछि। तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा,
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो ए सब फीचर गुड़ाक इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसिला देन आसुची फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी तो यार फीचर आसीची फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो देन रही ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रो freedom of trade and commerce within the country and between the states, power of the national legislature to make laws for implementing treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction, concurrent list. तो यही सब फीचर हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची देन रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर तो यूएसएसआर रो को फीचर गुड़ाक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसी देखि नेबा जे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन ठीक अछि देन रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीकार कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स तो ए दुटा फीचर साउथ अफ्रीकार कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी देन रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी जर्मनी रो कॉन्स्टिट्यूशन रो इमरजेंसी प्रोविजन्स ही आसी देन रही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान तो जापान रो कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ ए फीचर टी आसी तो वर्तमान आमे जानि नेले जे कॉन्स्टिट्यूशन रो को फीचर गुडाक पृथ्वी रो क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी देन आमे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर गुडिक उपरे आलोकपात करिबा तो प्रथम हेउची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इज फॉलोड इन आवर कंट्री द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम इज फॉलोड इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे द लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर इज इजी इन द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बट द बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज इफेक्टिव as there would be a lot of discussion and deliberations before making legislation. Article 74 and 75 is concerned with the parliamentary system at the center and Article 163 and Article 164 is concerned with the parliamentary system at the states. Article 74 of the Constitution provides that there should be a council of ministers with the Prime Minister and Council of Ministers can aid and advise the President. Article 75 of the Indian Constitution deals with the other provisions relating to the appointment of ministers. तो आम देश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम चली किंतु नॉर्वे प्रभृति देश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम थाए तो आर्टिकल 74 एवं 75 रे सेंटर रो पार्लियामेंटरी सिस्टम संपर्क रे लेखा थिबा बेले आर्टिकल 163 एवं 164 रे स्टेट रो पार्लियामेंटरी सिस्टम संपर्क रे लेखा थाए ता सहित आर्टिकल 74 अनुसार प्रधानमंत्री सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर निहाती रहिबे जे माने कि प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे परिबे एवं आर्टिकल 75 विभिन्न मिनिस्टर मानकर अपॉइंट उपरे मध्य फोकस करि थाए तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अनुसार गोटिए शासन व्यवस्था रे दी जण मुख्य थांती जेमिति कि आम देश रे प्रेसिडेंट नामक मात्र मुख्य थिबा बेले पीएम सरकारंकर मुख्य हटंती एवं प्रेसिडेंट ही संख्या गरिष्ठ दलर नेता को प्राइम मिनिस्टर रूप रे बाछंती ठीक अछि देन आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो आउ एक फीचर विषय रे जानिबा जहा कि हेउची a unique blend of rigidity and flexibility. The Indian Constitution is neither rigid nor flexible. This is also one of the reasons for its length. The famous examples of the rigid constitution is the Constitution of US and it is known as a rigid constitution as the amendment process is very difficult. The Indian Constitution is not very difficult to amend. As the Constitution of USA, it has gone through 103 amendments so far, but there are certain steps to be satisfied before bringing in the amendment. Thus, Indian Constitution is a unique blend of rigidity and flexibility. तो Indian Constitution rigid नुहे
कि फ्लेक्सिबल मध्य नुहे। तो एटा आउ गोटे कारण आम कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हेबार। तो यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड अटे। देन आमे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो आउ एक फीचर देखिनेबा जोटा कि होची फंडामेंटल राइट्स। पार्ट ट्रिपल आई of the Indian Constitution deals with fundamental rights. तो आम संविधान रो धारा 3 रे फंडामेंटल राइट्स वर्णित होईछि। तेबे सेगुडी को शॉर्टकटली टिके जानि नेबा। ओके। आर्टिकल 14 Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality. Article 15 Article 15 prohibits discrimination on the grounds of caste, race, religion, sex, and place of birth. Article 16 Article 16 of Indian Constitution guarantees equality of opportunity in matters of public employment. Article 17 Article 17 of the Indian Constitution abolishes untouchability and practicing it in any form is forbidden. Article 18 Article 18 of the Indian Constitution abolishes the titles. Article 19 Article 19 of the Indian Constitution guarantees various freedom. Article 20 Article 20 provides protection in respect of conviction for offences. Article 21 Article 21 of the Indian Constitution guarantees the protection of life and liberty. Article 21A Article 21A guarantees the right to free and compulsory education to children aged 6 to 14 years. Article 22 Article 22 provides protection against detention in certain cases. Article 23 Article 23 provides the prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24 Article 24 prohibits the employment of children below 14 years of age in factories, mines, or any other hazardous form of employment. Article 25 Article 25 provides the freedom of conscience and free profession, practice, and propagation of religion. Article 26 Article 26 provides the freedom to manage its own religious affairs. Article 27 Article 27 guarantees the freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. Article 28 Article 28 guarantees the freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Article 29 Article 29 protects the interest of minorities. Article 30 Article 30 provides minorities with the right to establish their own educational institutions, and the state shall not discriminate against any such minority institution while providing grants. Article 31A Article 31A of the Constitution guarantees the person right to have a property, and no person shall be deprived of this right. Article 32 Article 32 guarantees the right to constitutional remedies. तो आमे हमर सबु फंडामेंटल राइट गुडी को जानि नेले। देन आमे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संपर्क रे किछि कथा जानि नेबा। पार्ट IV of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy. It is the duty of every state to apply these principles while making any new legislation. The directive principles of state policy is similar to the instrument of instructions that is in the Government of India Act 1935. They are basically instructions to the legislature and executive that has to be followed while framing new legislation by the state.
तो प्रथमतः डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आम संविधान रो पार्ट IV रे रही। तो जेतेबेले कौनसी एक स्टेट न्यू लेजिस्लेशन फॉर्म करिथाए सेतेबेले डीपीएसपी इंस्ट्रक्ट करिथाए। तो डीपीएसपी कौन सब इंस्ट्रक्ट करिथाए जानि नेबा। फर्स्ट, the state shall promote the welfare of the people. Second, the state should ensure that the citizens should have adequate means of livelihood. Third, the state should make sure that the ownership and control of material resources are equally distributed among citizens. Fourth, equal pay for equal work. 5. The state must also take care of the operation of the economic system and should make sure it doesn't lead to concentration of wealth. 6. The state shall provide free legal aid. 7. The state shall develop the educational and economic interests of the weaker section. तो ए सबो इंस्ट्रक्शन स्टेट गुडी को डीपीएसपी ही इंस्ट्रक्ट करिथाए। नेक्स्ट आमे पढ़िबा ए फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। द फेमस सालिएंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज ए फेडरेशन with a strong centralizing tendency. The Constitution of India is neither federal nor unitary. The reasons for calling the Indian government unitary is that तो आम गवर्नमेंट फेडरल नुहे कि यूनिटरी मध्य नुहे बट एहाकू यूनिटरी कुहा जिबार कारण कोन सब रहिछि से सब संपर्क रे जानि नेबा। फर्स्ट रहिछि द डिवीजन ऑफ पावर्स इज नॉट इक्वल। सेकेंडली, the federations like the USA have rights to frame their own constitution, which is not possible in India, as the entire country follows the single constitution. ठीक अछि? Then thirdly, during the time of emergency, the states come under the control of the center. Fourth, there is a written constitution which is an essential feature of every country following the federal system. Fifth, the supremacy of the constitution is always protected. Thus, the Indian constitution can be described as quasi-federal or a federation with a strong centralizing tendency. Okay? देन आउ एक फीचर अडल्ट सफ्रेज विषय रे आमे वर्तमान जानिबा। The concept of adult suffrage allows every citizen of our country who is above 18 years has the right to vote in the election. Any adult who is eligible to vote should not be discriminated on any basis like gender, caste and religion. This provision was added in the 61st Amendment, which is also known as the Constitution Act 1988. The accepted age for voting was 21 before this amendment. Afterwards, it was changed to 18 years of age. Article 326 of the Indian Constitution guarantees this right. तो आम Constitution रो 326 धारा अनुसार आम देशर नागरिक माननकु भोट दे निज सरकार बाछिबार अधिकार रहिछि। जेतेबेले सेमाने 18 वर्षर होई जिबे 61तम अमेंडमेंट अनुसार जाति, लिंग, धर्म निर्विशेष रे समस्ते भोट दे परिबे, जाकि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1988 भाबरे जणासुना। ओके, देन आमे हमर आउ गोटे फीचर आडकु बढ़िबा जोटा कि होछि an independent judiciary. The judiciary ensures the proper functioning of the Constitution and the enforcement of various provisions of the Constitution. The Constitution makers ensure that judiciary has to be independent so that it will not be biased. The Supreme Court is considered as the watchdog of democracy. There are various provisions in the article which ensure the independence of the judiciary. The appointment of judges is independent and there is no involvement of any executive authorities. The tenure of judges is secured.
The removal of judges from the tenure must be also based on the constitutional provisions. Then आमे आउ गोटे फीचर संपर्क रे जानिबा जोटे कि होची ए सेक्युलर स्टेट. Okay? The term secular state means that there is no separate religion for the state and every religion is respected equally in the state. The preamble of the Indian Constitution itself states that India has to be a secular state. The fundamental rights provide the citizens freedom to follow their own religion and religious practices, and no one can be forced to follow any religion. The proposal of developing a uniform civil code is also provided in the directive principles of state policy in order to resolve the differences between various religions, though it is not implemented still. Article 26 also provides the right to manage their own religion in order to prevent any intrusion. The Supreme Court has also held that various religious dominations like Anand Margi, though they are not considered as separate religion, will also enjoy protection under Article 26. तो भारत रे कोनोसी निर्दिष्ट राष्ट्रीय धर्म नाही. आम देश रे विभिन्न धर्मर लोक बास करती एवं से माने जे कोनोसी धर्म ग्रहण करी एहर प्रचार एवं प्रसार मध्य करि परिबे. तो भारतर संविधानर मौलिक अधिकार रे 25 धारा रु 28 धारा मध्य रे धर्मगत अधिकार दिया जाइछि. 1976 मसीह रे संविधानर 42तम संशोधन आईन अनुसार संविधानर प्रस्तावना बा प्रिएम्बल रे मध्य एक धर्म निरपेक्षता राष्ट्र बोली उल्लेख करा जाइछि. राष्ट्र कोनोसी धर्मर विरोधाचरण करे नाही. ओके, देन आमे नेक्स्ट फीचर आडको बढ़िबा जहा कि होछि सिंगल सिटीजनशिप. There is no separate citizenship for the states and the center like in various federal countries like the USA. There is single citizenship provided to our citizens. Part 2 of the Indian Constitution. Example, Article 5 to Article 11 of the Indian Constitution deals with citizenship. The Citizenship Act 1995, which was amended recently in 2019, also deals with citizenship. Single citizenship allows the person to enjoy equal rights in various aspects across the country. According to Article 5, it is clearly mentioned that the person will be considered as citizens of the territory of India, which ensures that there would be only single citizenship. The citizenship of Indians is largely determined by the principle of jus sanguinis. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 2 रे सिंगल सिटीजनशिप ऊपर लिखित अछि. ता सहित आर्टिकल 5 रु आर्टिकल 11 सिटीजनशिप ऊपर डिस्क्राइब करि थाए. सिटीजनशिप एक्ट 1955 जे कि 2019 रे अमेंड करा जाइछि ताहा मध्य सिटीजनशिप ऊपर ही पर्यवेसित. ओके, सिंगल सिटीजनशिप परे एबे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज संपर्क रे किछि कथा जानि नेबा. Okay, fundamental duties. Article 51A of the Indian Constitution provides various fundamental duties. There are no specific provisions to enforce fundamental duties in the courts like the fundamental rights, but it is also necessary to follow the fundamental duties. There are various duties provided to a citizen like. तो हमरो आर्टिकल 51A रे फंडामेंटल ड्यूटीज वर्णित. तेबे से गुडी को कोन कोन से सब जानि नेबा. ओके, टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स आइडियल्स and to abide by the provisions of the Constitution, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to value the rich heritage of our country, to defend our country when there is a necessity and to render national service when called upon, to protect environment and carry out measures to improve them, to safeguard the public property,
and to promote harmony and the spirit of a common brotherhood. तो आमे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो 51A आर्टिकल रे लेखा थिबा फंडामेंटल ड्यूटीज संपर्क रे जानि नेले। तापरे वर्तमान आमे हमरो शेष फीचर आड़ को बढ़िबा हम कॉन्स्टिट्यूशन रो जोटा कि होची जुडिशियल रिव्यू। The concept of judicial review is an essential feature of the Constitution which helps the Constitution to work properly. The judiciary is considered to be the guardian of the Constitution. Thus, it is the duty of the judiciary to check the actions that are violative of various articles in the Constitution. The actions of various organs of the government like executive and legislature can be questioned by the judiciary using the judicial review. Article 32 and Article 136 of the Indian Constitution are the articles related to the judicial review in the Supreme Court. Article 226 and Article 227 are related to the judicial review in the High Court. The scope of judicial review is limited to 3 grounds, that are unreasonableness and irrationality. Second one is illegality and third one is procedural impropriety. तो वर्तमान आमे जुडिशियल रिव्यू संपर्क रे भी जानि नेले। वर्तमान हमर सब फीचर गुडी को संपर्क रे आमे अल्प बहुते जानि सारिछे। देन आमे कंक्लूजन आड़ को बढ़िबा। The Indian Constitution has a lot of salient features which makes it special. The lawmakers have taken all the factors into consideration and have tried to accommodate all the differences in our country. The Constitution and various rights provided in the Constitution acts as a guardian to our citizens. तो हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं जो विभिन्न प्रकारर राइट्स सब रहिछि सेगुड़ाक आम सिटीजन मानक पई गार्डियन हिसाब रे काम करि थाए। तो ठीक अछि, वर्तमान आमे हमर सब फीचर गुडी को डिटेल्स रे जानि सारिछे। वर्तमान आमे सेही सब फीचर गुडी को ऊपरु आसुथिबा किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कस करनेबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी 42nd Constitutional Amendment, ऑप्शन सी 44th Constitutional Amendment, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो देखिनेबा एहर सटीक आंसर टी हेउची ऑप्शन बी 42nd Constitutional Amendment। Number 2 question. The idea of concurrent list in the Indian Constitution is taken from the Constitution of what? Option A Ireland, option B Canada, option C Australia ना option D Japan। तो यार सटीक आंसर टी देखिनेबा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि, 7th schedule is concerned with what? Option A from languages, option B partition of powers between center and states, option C from the judicial areas of the states ना option D from पंचायती राज। तो यार सटीक आंसर टी हेउची ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को बढ़िबा। What is not taken from British Constitution in the Constitution of India? Option A Parliamentary rule, option B single citizenship, option C fundamental rights ना option D cabinet system। तो यार सटीक आंसर टी हेउची फंडामेंटल राइट्स। आउ बाकी तीनटा जाक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु इंडिया को आसीछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, which one of the following statements reflects the republic character of Indian democracy? Option A written constitution, option B no state religion, option C devolution of power to local government in institutions,
ऑप्शन डी इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो यार सठिक आंसर टी हेउछि इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि हु हैड सेड दैट द प्रीएम्बल इज द कीनोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन सी डी डी बासु, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो यार सठिक आंसर टी हेउछि ऑप्शन बी अर्नेस्ट बार्कर। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनश्राइन्स द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आइडियल्स मेनली इंस्पायर्ड बाय द व्हाट। ऑप्शन ए रशियन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी इरिश रिवॉल्यूशन, ना ऑप्शन सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ना ऑप्शन डी कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो यार सठिक आंसर टी हेउछि ऑप्शन सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेक्युलर स्टेट इज इंडिया। ऑप्शन ए सिविल इक्वालिटी, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी नो रिलीजियस एजुकेशन बाय द स्टेट, ऑप्शन डी टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो यार सठिक आंसर टी हेउछि ऑप्शन डी टैक्सेशन ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टी। Then next question टी रहिछि in which of the following forms of government is the second chamber as indispensable part of legislature। तो फर्स्ट ऑप्शन टी रहिछि प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन बी पार्लियामेंटरी, ऑप्शन सी यूनिटरी, ना ऑप्शन डी फेडरल। तो यार सठिक आंसर टी हेउछि ऑप्शन डी फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन टी बा हमर लास्ट क्वेश्चन टी रहिछि which of the following is not matched correctly। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 20 to 22, ऑप्शन सी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 to 28, ऑप्शन डी राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम, आर्टिकल 29 to 30। तो यार सठिक आंसर टी हेबो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 20 to 22। तो आजिर क्लास टी एठी सरुछि। आशा करूछि क्लास टी आपण माने बुझि परिथिबे एवं एहा आपनको निहाती एग्जाम रे हेल्प करिवो। नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ एक नुवा टॉपिक विषय रे कथा हेबा। थैंक यू।